और ये हमारे पास XPG के 8GB रैम है जो मुझे 2999 के पड़े थे सिंगल यूनिट। 1 TB की स्टोरेज हमारे लिए काफ़ी होगी और SSD जिसमें हम विंडो इंस्टॉल करेंगे। 550 वाट के SMP इस बिल्ड के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता और अच्छा SMP है। आने वाले 6-7 साल में मुझे इसे अपग्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मदरबोर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ASUS की तरफ से है। ये B450 सीरीज़ का सबसे बेस्ट मदरबोर्ड है, बट सस्ता नहीं। मगर मैंने इसे परचेस किया था 17,999। आप खुद देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बड़ा ही शानदार मदरबोर्ड है भाई, दिल खुश हो गया। ये नट्स अनस्क्रू कर लेते हैं ताकि हम अपनी CPU कूलर लगा पाएँ। आपको बड़े ध्यान से प्रोसेसर को इंसर्ट करना है। एक एरो मार्क बना हुआ होगा मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों के ऊपर। जब वो दोनों सिंगल लाइन पर लाइन हो जाए मतलब आपने बिल्कुल सही इंसर्ट किया है। CPU कूलर भी तो जरूरी है भाई। आइए इसे लगाते हैं। इसे लगाने के बाद बढ़ेंगे रैम इंस्टॉलेशन की ओर। SSD के लिए मदरबोर्ड में ही M.2 की डुअल स्लॉट लगी हुई है। हम इसे पहले स्लॉट में इंसर्ट करेंगे। ये कैबिनेट हमारी कॉर्सेर की मिड टावर कैबिनेट है। आइए इसे खोल लेते हैं।
हम इंस्टॉल करेंगे PCIe स्लॉट 1 पे सबसे पहले वाले स्लॉट।